Okay. See, the topic for today is basics of publishing quality research. When we talk about quality, and quality is always a subjective word, for some, quality means publishing in an ABDC journal, for some, it might be publishing in UGC care journal, for some, it would be publishing in an Elsevier research journal also. For us, quality should be in terms of what relevance research has for the industry and for the students as well. So the research should be in a way that it adds anything in terms of the research inputs. And secondly, it should also lead to the fact that it should also lead to some sort of addition to the research wing also. And both areas have to be catered by your research inputs. Let us see what is the current scenario. If we could actually see the graph from 1996 to 2020, we can easily see that number of peer-reviewed journals or number of articles or let's say unique authors. I'm a unique author, so as you are a unique author, we can see that the increment is around great from 1200 or say from 1250,000 to as high as around 3500K. That means the number of advancements in the field of research is actually going at a blitz pace. When the number of articles are getting published with a number of journals, what happens is there is some sort of an information overload. Okay, what do we mean by information overload? Is that, see, I have a paper to publish, but I do not know which journal because there are n number of journals for single particular subject domain. Number one. Secondly, maybe my expectations are that I want to publish in a journal which has a higher citation factor, or maybe which is an open access journal. But at the same time, an open access journal might not have the sufficient metrics to justify your research also. Maybe you want to submit a paper where the journal has an impact factor greater than 3, but it is not an open access journal. So you will also have to find out what feeds, I mean, what should be in a way that can be actually synchronized with your expectations. Number two. Number three is metrics are not the only way to judge an author or a journal. What does it mean? It means that yes, we try to compartmentalize the entire research output on the basis of say how to judge the quality, maybe in the form of an H index, maybe in the form of a site score, maybe in the form of say Simago factor. But at the end of the day, metrics are only one way to judge the quality of a journal, and those metrics are not the only way to judge. What is a better way? Maybe some qualitative aspect along with the quantitative aspect, and then we can combine the qualitative as well as quantitative metric so as to ensure that maybe our research paper finds a place where it can better justify the originality and maybe the relevance as well. And at the end, the research should be outcome based. A lot of researches are coming up right now, right? Some will be very qualitative and some will be very quantitative. We need to have a balance, and at the same time, we need to have something which could be of policy relevance to the policy makers and to the society as well. Maybe my research is only a basic research, it is not a research which can be applied to an industry. So it will not be fruitful for the industry, and that's why your marketability of the research will become lesser. Okay, I'll stop here. And what do we mean by the marketability of your research? Anyone who wants to talk about marketability? Have you all thought about your PhD topics, what you are thinking to plan ahead? Divya, Madhvendra, Somnath, what is the area of interest and what Uh, exactly? Yes, Madhvendra, go ahead. सर इनिशियली जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो फिनटेक को लेकर है. आई जस्ट वांट टू Uh-huh. एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स हु अफेक्ट द फिनटेक adoption or intention to use in Indian context. Okay, great. And who else? Anyone else?
I think sir marketability of the research is that इंडस्ट्री को नीड हो, एकेडमिक में उसका गैप हो और नीड हो, Hmm. और प्लस वो Okay. कुछ फ्यूचरिस्टिक बताए, मे बी करंट गैप को या तो कोई फिल कर रहा हो, या फिर जो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, Mm-hmm. ट्रेंड आ सकता है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज बताई जाए कि अगर ये चेंज लाएं अपने एग्जिस्टिंग मॉडल्स में या हम लोग प्रैक्टिसेस में, तो इट विल हेल्प इन लॉन्ग रन। तो वो चीजें मार्केटेबिलिटी में Excellent. होती हैं। Excellent. See, marketability का मतलब ही यही है that whatever the area of research you are thinking of pursuing ahead, so your PhD is going to get submitted say by another 3 years, 4 years time. The topic which you decide today should not be redundant 3 years later. In that case, your PhD will not be worth it. Your PhD should be in a topic which is futuristic, number one, and then it should also be of something relevance which is going to add, say, something to the existing database of literature as well. Maybe you come up with certain models, which Madhvendra is talking about. Maybe you come up with certain specialized segment of knowledge which can be used by later on researchers also. And for that, we need to understand that marketability becomes a very important factor. So, while picking your research topics, it is absolutely important to find out only those topics which are futuristic, has going to be having some impact to the industry, maybe over a period of time. And thirdly, it should somehow be in sync with what you are thinking and with what industry is also planning. Say fintech, as Madhvendra is talking about, fintech is basically a combination of technology and finance, right? So that has a scope not only now, but also a scope maybe 5 years, 10 years down the line also. It will be something which would be what is the segment of consumer behavior which we want to focus upon so that it is marketable 3 years, 4 years down the lane is another question. So while picking subtopics or subdomains, we need to be critical while selection of the sub themes also for the reason that if your PhDs or if your research is not marketable, it will not arouse interest for other researchers, other industries, and other academicians as well. So maybe your research will be limited to the PhD thesis books which you will be submitting, and the research is of relevance only if it goes beyond the boundaries of the books and libraries and is also implemented. So applicability part becomes another important part. Am I clear to everyone? Am I making sense? So while Yes, picking sir. your topics, pick Yes, up sir. Yes. only those topics which are not redundant. In case you are thinking that Sir, what is okay, your research area? see, my research area was financial literacy. I picked up the topic in 2013 when people were talking about financial inclusion, right? That was a time when a scheme of Jan Dhan Yojana was opened, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. And my Okay, sir. argument at that point of time was that financial inclusion is something which will happen only when financial literacy is there. No one was talking about financial literacy, people were only talking about financial inclusion. And I realized that maybe financial literacy is one concept which will actually garner more attention maybe 3 years, 4 years down the line. And it actually happened. Today is we do not talk about financial inclusion, but we talk about financial awareness, financial capability, and financial literacy. Why? Because people have money and people do not want to deposit in FDs. They want to deposit their money into something which is more concrete. They want to deposit where they get more returns. And that is how financial literacy has actually reached people. So when it came to marketability, my research was very marketable and it is going to be marketable ahead also. I ended up designing a model for the financial literacy framework for India, and it's a good model and it's somewhat correlated that financial literacy comes first and financial inclusion comes second. So that is how you should actually relate that 5 years down the line, how your PhD thesis or how your research is going to actually make a dent in the existing literature.
अगर एग्जिस्टिंग लिटरेचर में पुराना लिटरेचर पड़ा हुआ है, वही लिटरेचर आप यूज करके एक नई थीसिस बना देते हो, इट्स नॉट गोइंग टू सफाइस, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज. What you should think is you should come up with something new and very innovative that is of great use to all the practitioners also. तो ये आता है, ये धीरे धीरे काम करके. when I said yesterday also that as long as you are going through the literature, as long as you are going through the research papers, only then you'll be able to find the research gap. बिना रिसर्च गैप के रिसर्च पीएचडी थीसिस सबमिट हो सकती है, लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा नहीं, और ना ही उसका कोई रेलेवेंस होता है एट द एंड ऑफ द डे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट योर रिसर्च गैप इज. बट रिसर्च गैप से पहले आपको टॉपिक और उसकी मार्केटेबिलिटी पे एक फैक्टर आता है. So if you are picking your topic, please note that it is somehow marketable, and it is also one factor. क्योंकि marketability की बात कर रहे हैं, तो we should also talk about the global nature of your topic also. If it is only relevant to India, right? Understand? अगर सिर्फ इंडिया के लिए relevant है तो okay, so you are catering to one part of it. Maybe your topic is very global. Maybe we are talking about say cryptocurrency or something. कुछ ऐसा हम लोग बात कर रहे हों जो कि सिर्फ आपके देश को ही नहीं, मे बी पूरे दुनिया को अफेक्ट करता हो. So your topic can be global in nature also. If it is global, what happens? What is the advantage of having a research topic which is very global? Anyone? What will be the advantage? अगर मेरा थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. My topic was financial literacy and I was trying to relate with financial inclusion. But financial literacy का extended form जो होता है वो financial capability होता है, and financial capability is a framework which is used by countries worldwide. So rather than using the term financial literacy, I use the more generic term financial capability, because that is a term which is used by most countries. So why use financial literacy? Why not use financial capability? And that is how I made my topic more marketable also and more global also. And this is one thing which you should also keep in mind, that maybe somehow you can make your topics global as well. That is how your PhDs, or maybe say you are going to get interviewed for some college or some institution outside India. So that concept somehow plays the game also. So you also have to understand that your PhDs need to be global as well. At the end of the day, a research shouldn't be bound just for the sake that it has to be done, but it should go beyond the parameters and boundaries and should find out what is of more relevance. Is that clear? Is the concept of marketability clear? Okay, so on to the presentation again. Okay, the question is, why do we need to publish? Okay, so when we are talking about publishing, we need to understand that first thing is, it is a requirement. No, it's just not a requirement, but we also need to publish for a reason, that somehow while publishing we'll get to know, okay, what are the troubleshooting areas and what are the areas where we actually need to dwell upon while getting our papers into the line of logic mode. What does it mean? It means that while publishing, we need to cater to the areas which have not been touched. And how we'll know it? When we'll start publishing. And what exactly is to be published? What exactly is to be published is new and original results, number one. Second is manuscripts that will advance the knowledge and understanding in a certain scientific field. Take 2 points. First is, whatever we are talking about has to be new and original. And secondly, that is adding to the existing literature. As we already discussed, that
Our research should be absolutely new, should be original, and third, that it should add to the existing literature database. It should not be just lifting from the previous databases and forwarding ahead. No, it should something that actually create a new repository of the knowledge. What should not be published? Outdated work. As I was talking about, that anything which is redundant, has no marketability, has no globality, should not be published. And secondly, it should not be duplicated also. Maybe there's already a research work conducted, say in bitcoins or maybe in cryptocurrency, and we're just replicating that particular topic on a smaller population segment. So that's not research. That is just an extension of the existing research. We should come out with some dimension. That's fine, but then that dimension should not be located just to ensure that okay, so there is an existing research maybe that is conducted in say Kanpur area. Okay, so that should not be that okay we have done in Kanpur, we should also do it in Lucknow area. That is not more of a, you can only say that that is an extension of already existing research. What we need to find out that maybe there is some other dimension which was initially working in Kanpur is not working in Lucknow. So we can come up with a certain different model or maybe extension on the model and then we can implement it in the Lucknow area. Say someone is doing a research in the field of consumer behavior in the apparel sector. Okay, so that sector is the apparel sector and we are doing research on consumer behavior. We've tried to fit in a model for say area of Kanpur. We've done that research, that's fine. We came up with a model. Okay. But is the model applicable to Lucknow? No. Obviously, there's a demographic change, and since there's a demographic change, it's bound to have an influence on consumer behavior as well. And when there's an influence on the consumer behavior, what we need to do is we need to create a model which is more justified for that particular demographic profile. Once we are able to accommodate and adjust and make necessary changes, keeping in mind the demographic profile, that is how we can actually come up with certain research which is more original, more unique, and more relevant to that particular demographic sector. Right? You might be getting an n number of publications, n number of theses already made in your research domain. For sure, 110%. Most of the literature available is there. What you need to do is you need to apply certain common sense, and that common sense should not be restricted to just one area. It should be thinking about how you can actually implement it to an area where there are certain demographical changes. Is that clear to everyone? Clear है? Yes, sir. Okay, so I'm moving ahead. Okay, there are certain questions to answer before you write. Let us see what are those questions. First, we should know that is your topic new and interesting. Is it a current hot topic? पेपर लिखने से पहले हमें कुछ सवाल के जवाब देने चाहिए. अगर आपके इन सवालों के जवाब क्लैरिटी के साथ पता है और सबका आंसर यस आ रहा है, then you should actually start working on your manuscript. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? ओरिजिनल वर्क होता है जो फर्स्ट रिटन ड्राफ्ट होता है जिसपे आप बेसिकली कोशिश करते हैं रिसर्च लिखने की. सो पहला काम क्या है? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इज इट न्यू एंड इंटरेस्टिंग. ठीक. सेकंड है, क्या एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं? इज योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च? आर यू ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स टू द एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस? आर यू ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स? Are you trying to create any extra or any additional knowledge which is not available? Are you trying to give answers to the industry which are having certain problems? ठीक है. Are you ready to publish at this point? Why? Because maybe you not have the entire data right now. So say in the year 2017, I decided to maybe find out what is going to be the GST implication. But 2017 June GST was implemented. Will it be actually easy to actually say write a paper on implementation of GST or implication of GST before GST was implemented? No, maybe because data would not be good enough to actually justify what is the implication.
What we needed to do at that point of time was we needed to bide the time. We needed to wait so that we have some data on which we could work and find out whether there is any implication, whether there is some sort of relevance, and whether there we can actually work to find out certain solutions to that particular problem. For that, timing becomes another factor. Is that clear? Okay. Another part is a good manuscript should have two things. One is the content, another is the presentation. When we talk about content, we do not mean the content in terms of literary English usage. We mean that it should be exciting. It should be in a manner written which is actually going to create interest in the minds of the reader. It shouldn't be as if a literature has been just copied, redrafted, rewritten, paraphrased, and just presented to the reader. No, it should actually written in a manner so that once you are going through it, it should lead to a place where you have started reading, you are finding certain problems, and then you are finding at the end that there are certain solutions also. Okay, another thing is it should have obviously a clear and logically constructed pattern. Let me ask a question right now. When do we write the introduction in case of a research paper? Right. When should we write the introduction of a research paper? Yes, answers is invited. जिगेशा, इंट्रोडक्शन कब लिखा जाता है? सर मोस्टली जब हम लोग अपना लिटरेचर रिव्यू लिख चुके होते हैं उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम लोग क्या एम कर रहे हैं Okay, इस रिसर्च। and okay. Uh, I don't see any answers in the chat boxes also. Please type in your answers. Let me see what you are coming up with. Vibha, Divya, Madhvendra, Somnath, Mukta. Everyone to answer. Let me see what exactly goes through your mind. When should we write the introduction in case of a research paper or say in case of a PhD thesis? Sir, I think first we have to identify the research gap, and when we write down the introduction, to at that time we have to also mention the research gap. So I think introduction will come first, and literature भी also required. But introduction में हम जैसे identify करेंगे कि हमारा क्या एक base है और हम नहीं जो नहीं जो gap है। के से सपोज छह हिस्से होते हैं ना, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, देन डेटा फाइंडिंग्स होता है, फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन एंड देन इट इज रेफरेंसेस। ठीक है, हमने सब कुछ लिख लिया, लेकिन इंट्रोडक्शन जो होता है वो कब लिखना चाहिए? मतलब सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रोडक्शन लिख लेना चाहिए, या इंट्रोडक्शन बाद में लिखना चाहिए, या लिटरेचर रिव्यू बाद में लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए? Sir, If you have to write your PhD thesis, okay, let me re-ask the question in a manner. If you are supposed to write your PhD thesis, when will you be writing the introduction part of your research Sir, thesis? हाँ सोमनाथ, sir, I would be writing the introduction at the last. you will be writing introduction at the last. Okay, I'll get back to you, Somnath. Anyone else? आई थिंक सर थर्ड लास्ट होगा बिकॉज Third लास्ट में last तो हम होगा, लोग अपना okay. रेफरेंस और एब्स्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट आई थिंक Okay, सबसे लास्ट में okay. लिखना चाहिए। Anjana is saying simultaneously once you have some broad map in mind. Okay, great. Who else? Only three people out of 20 odd students today? No. Wake up, सर everyone. इस स्टैंडर्ड का नहीं पता, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन आल्सो कि ऑथर की क्या अप्रोच है लिखने की, शायद इस पर भी डिपेंड करेगा। नहीं, ऑथर की अप्रोच चाहे जो हो, हमें एक ये चीज़ तो जी समझनी जी। चाहिए कि हमें इंट्रोडक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है. Why do we write introduction? We write introduction not for our sake of completing our PhDs or research papers. We write introduction for the sake of a reader who wants to read your paper, isn't it? अगर उसको हमारा पेपर पढ़ना है तो वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, सो 100 वर्ड्स,
Abstract will not give you the entire picture of the paper, so he will सर तो shift to अकॉर्डिंगली फिर introduction. इंट्रोडक्शन तो लास्ट में लिखना चाहिए व्हेन वी कंप्लीट द होल पेपर. Introduction should always be written at the last. इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन इन द लास्ट, सीक्वेंस में भले पहले नंबर पर होता है. ठीक है, तो अगर हम एक पूरे पेपर को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में, तो जो सेगमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन है वो तो एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिख देते हैं, लेकिन सबसे सर अच्छा, जो खासियत मोस्टली पेपर जो डेस्क रिजेक्ट होते हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन हम्म, जो प्रॉपर ना लिखा जाता है उसकी वजह से होते हैं क्या? बताता हूँ अभी. पहले उसको कंप्लीट करके फिर आता हूँ मैं हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन पे. ठीक ठीक. कि फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम एक बाहर के रिसर्चर के लिए लिख रहे हैं. ठीक है, जो पढ़ना चाहता है he will go through maybe maximum say 5 minutes or 10 minutes of your introduction. If your introduction is neatly written in a way that it is in the form of a story, वो बता रहा है कि क्या था सिचुएशन पहले, क्या सिचुएशन आगे हुई, क्या रिसर्च गैप निकला एंड कहाँ पे जाके कंक्लूड हो रहा है. दैट इंट्रोडक्शन talks about your subject domain also, that talks about your research also, that talks about the entire chronology in that particular domain also. So it is talking about three things. One is your perspective on the research on that particular domain, other authors perspective also. भले लिटरेचर रिव्यू में बाद में फिर से हम लोग लिखते हैं, बट कुछ ऑथर्स का वो भी होता है, और मार्केट में उस पर्टिकुलर डोमेन में क्या चल रहा है वो भी मेंशन है. एंड अगर वो तीनों को बहुत अच्छे से पिरो दिया जाए, राइट, अगर तीनों को बहुत अच्छे से इनकैप्सुलेट कर दिया जाए, वी विल बी इन अ पोजीशन टू राइट द इंट्रोडक्शन, नथिंग लाइक इट. एंड इंट्रोडक्शन, किसी काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों ने बोला है कि इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी रिटन एट द लास्ट. सीक्वेंस नंबर वन होगा, लेकिन जब हम रिसर्च मेथडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा फाइंडिंग, कंक्लूजन लिख चुके होंगे, रादर रेफरेंसिंग भी कर चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे. तो इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन वंस यू हैव रेड एवरीथिंग. कंक्लूजन भी तो आ चुका है. जब हमें कंक्लूजन पता है, हमें रिसर्च भी पता है, मेथडोलॉजी क्या यूज़ किया, हमें ये भी पता है कि लिमिटेशंस क्या हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च की, हमें ये भी पता है कि सजेशंस और क्या है वे अहेड. तो एक्चुअली यू नो राइट फ्रॉम ए टू जी what exactly you have done in the research. When you know everything about the research, that is the best moment to write your introduction, because now your ends are met, and when your ends are met, you will be in a position to better describe what exactly do you mean by introduction. Introduce आप ऐसे करेंगे रिसर्चर को कि उसे कुछ नहीं आता, लेकिन आप वहाँ पे उसको जाके छोड़ते हैं इंट्रोडक्शन के एंड पे कि he is compelled to read the other sections of research also. So that makes it different. अगर आपने यहाँ पे ही छोड़ दिया रिसर्च को कि यू आर लिविंग हिम कि नहीं, वो पहले ही सेक्शन पढ़ने से उसको लग रहा है कि ठीक है पेपर बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, तो वो एक बार सरसरी निगाह से आपका डेटा एनालिसिस देख लेगा, फाइंडिंग्स देख लेगा, बट ही विल नॉट बी लुकिंग बियॉन्ड. अ ट्रू रिसर्चर इज समवन हु राइट्स हिज इंट्रोडक्शन इन अ मैनर दैट बाकी लोग कंपेल होके आगे के सेक्शंस को पढ़ें, मजबूरी में नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें. तो वो जो इंटरेस्ट आता है वो इंट्रोडक्शन एक्चुअली प्लेज अ लॉट ऑफ पार्ट इन योर डेस्क रिसर्च ऑल्सो. बट माधवेंद्र, डेस्क रिसर्च अगर रिजेक्ट होता है तो उसके बहुत कारण है. फर्स्ट रीज़न तो यही है कि अगर वो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में नहीं फिट होता है. अगर जर्नल के एडिटर इन चीफ को ये लगता है कि आपके रिसर्च पेपर का जो एम है, जो सब्जेक्ट है, जो डोमेन है, वो उनके जर्नल के एम सब्जेक्ट डोमेन से नहीं मैच करता है, तो रिजेक्ट कर सकता है. आपने कोई टूल टेक्निक लगाई जो बहुत ही पुरानी है और आज के ज़माने में वो टूल टेक्निक नहीं यूज़ होती है, तो भी वो रिजेक्ट करता है. वन ऑफ माई पेपर्स वॉज रिजेक्टेड 2 years back since I used a very outdated SPSS version and they needed the latest SPSS version, so that was also rejected. Third is that whatever tools or whatever techniques you are applying need to have a proper justification. So just for the fact that you can apply SPSS to any data set doesn't mean that you need to apply. क्योंकि अगर हम अगर स्टूडेंट टी टेस्ट की बात करें या काई स्क्वायर की बात करें, हम रिग्रेशन कोरिलेशन की बनाएं, तो डेटा सेट पे तो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो वो सब पे लग जाएगा, बट that is only a software. We need to understand that software is only going to support your research. Before software, you need to understand why that particular tool is being used. It is not necessarily कि हर tool या हर सर technique हर data set पे लग जाता है.
हाँ सर मान। कभी कभी जैसे ये देखा है कि सेम फील्ड से रिलेटेड पेपर वहां पर एक्सेप्ट हुआ है इस जर्नल में, बट उसके हम्म। बावजूद भी वो डिस्क रिजेक्शन हो जाता है ये कह के कि डज नॉट मीट विद द स्कोप एंड एम। ये क्या हुआ है सर हो इसमें? सकता है ये एडिटर इन चीफ के डिस्क्रिप्शन पे होता है बहुत कुछ, ठीक है। I have quite a few posts written on LinkedIn also. I've seen where people keep on telling the same paper got rejected say 5 times or 6 times. और काफ़ी रीजंस के कारण होता है, कभी कभी डेस्क रिसर्च से रिजेक्ट इस कारण भी हो जाता है कि कहीं आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं थे, या आपने स्टैटिस्टिकल रिगर नहीं दिखाया है अपने काम में, तो उस कारण भी होगा वो डेस्क रिसर्च। सी डेस्क रिसर्च, सॉरी, डेस्क से ही अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर रीज़न हो। देयर कुड बी एन रीजंस, बट यस वन ऑफ द रीजंस इज इट डजंट फिट इनटू योर एम्स एंड स्कोप। मे बी पहले वो ले रहे होंगे, मे बी उस समय ज़्यादा शक्ति नहीं थी तो वो कुछ भी ले रहे थे। तो अब ये है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फिट इन यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एआई, क्योंकि अब चाहे हम एल्सीवियर की बात करें, चाहे एमिडल की बात करें, टेलर फ्रांसिस की बात करें, या यूजीसी केयर की बात करें, सबके अपने अपने जर्नल फाइंडर हैं। You can always upload your abstract, title, keywords, and you will find out which journal is the most suitable as per the artificial intelligence they have. And that is how you should proceed with most researches. तो सर Otherwise, बहुत से जर्नल भी रिसर्च असिस्टेंस देते हैं, मतलब अगर उनके जर्नल में रिजेक्ट होता है तो आपको अल्टरनेट ऑप्शंस देते हैं। सर एक हाँ क्वेश्चन बहुत ये था सारे कि भी जैसे देते कि आपने कहा कि एसपीएसएस यूज़ करना चाहिए लेटेस्ट वर्जन, तो आजकल जैसे हैं। कि एनालिसिस के लिए कौन सा मेथडोलॉजी लेटेस्ट माना जाएगा? नहीं, इसके लिए माधवेंद्र, सी द थिंग इज, अभी तो मेरा तो यही मानना है कि वेदर यू आर यूजिंग योर एसपीएसएस, वेदर यू आर यूजिंग पीएलएस या आर या एमोस, अगर हम ये यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे आ गए हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास डेटा सेट जो है उसमें हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ दो डेटा सेट के मीन्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दो डेटा सेट के हम वेरिएंसेस को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कोई मॉडल का फिट देखना चाहते हैं, गुडनेस ऑफ फिट जिसको बोलते हैं, हम क्या ये देखना चाहते हैं कि मेरा फ्रेमवर्क में जो वेरिएबिलिटी आ रहा है, whether there is a variability in my particular variable, and that variability in the variable by n number of factors, जो कि तुम बात कर रहे थे फैक्टर्स ड्राइव वाले में, तो वो उसके लिए यू कैन इवन यूज एम एस एक्सेल, एंड दैट इज इन इट सेल्फ अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू यूज। See, these are all tools, right? And before using tools, we need to understand what are the research methods. तो हमें ये आना चाहिए कि हमें कौन से डेटा सेट पे क्या लगाना चाहिए। Saying that applicability of tools is very limited, we need to understand the usage of those things first. क्योंकि यूसेज अगर पता है तो, क्योंकि यूजर इंटरफेस है, एक आपको सॉफ्टवेयर अगर दे दिया जाएगा तो आप सॉफ्टवेयर तो किसी भी डेटा पे चला लोगे। So you should never be driven by the software. You should always be understanding at what time and for what relationship and for what interpretation you are trying to use that particular method or say technique. हर जगह chi स्क्वायर नहीं लगता, हर जगह रिग्रेशन नहीं लगता, हर जगह कोरिलेशन नहीं लग सकता, हर जगह डीएफए और ईएफए नहीं लग सकता, राइट। लेकिन लगाने वाले वो भी लगा सकते हैं क्योंकि डेटा सेट है, डेटा सेट तो न्यूट्रल होता है। आप टूल यूज करो वो सब पे सब निकाल देगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि okay, I think I lost the track due to some fluctuation in the internet. Okay, so where was I? Am I audible to everyone? यस सर। Yes, Okay, sir. so we were all talking about currently as to what research methods, tools, and techniques have to be applied. So, are there any questions till now, or should we go ahead?
कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव अहेड. ओके, समवन यस्टरडे ऑल्सो आज कि क्या हमें शॉर्ट आर्टिकल्स प्रेजेंट करने चाहिए, पब्लिश करने चाहिए या लॉन्ग आर्टिकल्स करने चाहिए. सो दीज आर दी ब्रॉड types of manuscripts available. So a manuscript doesn't necessarily need to be a full paper. If you could see, it could be your full articles, it could be your letters, it could be rapid communication, short communication, case reports, review papers, perspectives. I also told that there can be even a book review, there can be even a bibliography. These all can be published. Someone also asked whether it can be actually considered for API. Let's keep the API aside. Let's get on to publication. We have to publish, so that should be the first order. API will always follow suit once you are into good quality research. So take things one by one, and maybe whatever is in the control, let's work on it. Okay, how to evaluate in which category of manuscript do we need to publish? So these are the steps. First thing is to self-evaluate your work. Is it sufficient for a full article? Maybe our article is only of 2500 words. It will never be considered as a full-length paper because a full-length paper usually crosses the word limit of say 5000 to 7000 words. And a full-length article will be very exhaustive. It will be covering n number of dimensions. Okay. Second is, do you want to experiment with the new articles type? I have been publishing, say, in last 5 to 6 years, all full-length papers. I can go for the abstract of my PhD thesis, number one. I can also go for some book review. Say maybe I picked up a book on financial management. I did the entire book review and got it published. So these are the ways you can publish your manuscript. It doesn't necessarily have to be a full-length paper. But for researchers who are getting into your PhDs, you can always begin with full-length papers because the more you will write, the better you will understand what your key area or your key domain is. And obviously you can ask your colleagues and supervisor, and when you will be reading a lot of journals or articles, you'll get an idea, okay, as to how you should begin. And every sort of manuscript has their own prototype, set templates, set rules, set guidelines, set patterns of writing, set patterns of referencing. So that's one other part which actually creates a lot of hassle, because it doesn't that if you have written a paper and you're sending it to one journal will be accepted, the same format will be accepted by other journal. No, it isn't. What usually happens that if you have written for one particular journal, the manuscript then again needs to be revised as per the format required by the other journal. So if you're written for international journal or say finance, but what you need to do is you need to change the format for writing it for some other journal also. So the formatting conditions vary for journal to journal, and that is where the trick lies to understand what exactly is required from a journal's end. Okay, I asked the same question yesterday also, that why are we doing PhD? What is the area? Why are you trying to do your research? So for some it was PhD, for some it was a part of their mandate required for getting promoted. For some it getting into some consulting, research consulting agreements, and for some it was funding agreements. So these are the personal reasons for publishing. Any other idea, any other reason which you don't find there and you think that maybe okay, this is also one area or one reason for which you are getting into your PhDs or research? Anything which is missing? Can you replace the question mark? No one? फंडिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, PhD डिग्री हो गई, और कोई? सी रिसर्च कंसल्टिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, इंडिया में अननोन है, ठीक है, बट those who are known to this area also understand that research consulting is another area where you tend to actually add a lot more of acumen in your research prowess to the existing industry also. So that one area of publication is also required to get into that segment also. There are a lot of research firms in Delhi NCR area where they require whoever is actually joining their emerald publications or Elsevier publications to get through it. And even that is one area of competency. So it is not necessary that you need to get your PhDs just for getting, say,
A job, maybe a job can be in academics also, and maybe and that job can be in the research or consulting also. Okay, then we also need to ask few questions, right? At that point of time, we are trying to find out which sort of manuscript we should be doing it. Yesterday, I also discussed that what should be the area or what should be the type of research when we are trying to publish. Then we need to ask questions like, is your journal peer reviewed to the right level? Okay, what do we mean by peer reviewed journal? Anyone? What do we mean by peer reviewed journal? Anyone who wants to? पीयर रिव्यू का मतलब ये होगा Yes, कि सर जो है जर्नल हमारा जो है किसी और के द्वारा जो कि अननोन हो, और जो हमारे उस रिसर्च पेपर का रिव्यू करते हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। और ब्लाइंड पीयर रिव्यू में ये होता है जहाँ पे ऑथर की डिटेल्स वगैरह नहीं रहती और अननोइंगली लोग उसको जो है अनबायस्ड होके जो है क्रॉस चेक करते हैं। ओके। सी पीयर रिव्यू का मतलब है कि आपके ही डोमेन की किसी भी रिसर्चर से आपके पेपर की क्वालिटी को जज करा लिया जाएगा, चेक करा लिया जाएगा। सो दैट इज अ पीयर रिव्यूड। ब्लाइंड पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि the other details are kept hidden from the person who is judging the quality of your paper. So that comes under the category of blind peer review. What is better, blind peer review or peer review? Obviously, you would be understanding that blind peer review is one step ahead from the peer review, and then they also do a double tier or double tier peer review also, where they don't do it just at one level; they do it at two levels also. So the idea is a simple one. The idea is to ensure that greater are the hassles of getting it published, better are the chances that your journal is going to stay for a longer period of time in the research visibility, right? It is not only that your paper needs to get published, it also requires a few mandates such as whether your journal is a fit one, whether your journal is not going to accept any journal, I mean, any research article, whether you are writing in pharmacology, whether you are writing in English, whether you are writing in mathematics, whether you are writing in management of social sciences, it should have a cadre, it should have a clear cut grade as to what papers it is accepting and how fast it is going to make a decision or publish a paper. Maybe it might be taking say 6 months to 9 months to just give a review on the paper. That would be good enough delay for any researcher who is trying to get his PhD done in the nick of time. No, it will not be possible. So we need to understand that the faster the research reviews take place, the better it is for the researcher. However, there are very good quality journals which still take a lot of time. But then that is how the reviews are also busy, and that is why the reviews also take a lot more time. Then we're talking about impact metrics, like I was talking about H index yesterday, then site score. Then do we need to publish into open access? Yes, we need to publish into open access provided they are not predatory, provided they are not cloned, provided they are authentic. So open access journals are those journals which should not lead you to fall prey for cloned ones or predatory ones. They should be authentic enough and that should not be heavy on your pockets. Heavy on your pockets मतलब ये कि आपको पैसे नहीं देने पड़े. In case you are going to pay article processing charges, right? Then you should also be clear that article processing charges are justified, right? It shouldn't be that you end up publishing your article with a predatory journal just for the sake of giving money and getting a paper published. That's not a good idea to get it for a reason that over a period of time, जैसे जैसे research visibility बढ़ेगी, वैसे वैसे अगर आपका पेपर किसी predatory जर्नल में पब्लिश हो जाता है तो वहां से रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ओपन एक्सेस भले आपको शायद वो 3 महीने 6 महीने दे देगा, लेकिन 6 महीने के बाद वो पेपर ऑटोमेटिकली बाहर चले जाता है आपके परव्यू से, ठीक है। सो यू नीड टू ऑल्सो सी वेदर दी एक्चुअली जिन भी जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हैं वो हमारे
क्या वो dubious तो नहीं है और वो authentic है कि नहीं है. Authenticity चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर जो भी जर्नल है उसके होम पेज पे जाना चाहिए. होम पेज पे हमें एडिटर्स की डिटेल्स देख लेनी चाहिए, उनके प्रीवियस ईयर के researches it usually accepts. Number one, it should see the readership. What are the readers? What are the authors? इसी वाले सेगमेंट पे आपको एक चीज और दी जाती है. इस वाले सेगमेंट पे आपको दिखेगा कि रीसेंट रिसर्चेस कौन सी हुई हैं जो कि पेपर पब्लिश हुए हैं कुछ ऑनलाइन मीडियम पे. तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कौन सा पेपर एक्चुअली वर्थ इट है टू गो वन स्टेप फर्दर. Selection of your journal is a tricky one. A lot of people get confused and a lot of people get stuck with certain journals. Say you have sent a paper for review to a particular journal. A journal has not responded to you for last 3 months. And the rule says that if you have sent a paper, you can only send a paper to one journal to get a paper published. Unless there is a rejection from that particular journal, you can't send it to any other journal. Full stop. Which means they clearly are that you haven't sent that particular paper to any other journal for publication. Because that is very clear from their idea also, which means that at least you need to get the review upfront. And if you are stuck with a journal that has failed to respond you for last 3 months, that's how the challenge goes to start, because you haven't written any new research searching, or maybe thinking maybe the paper will get accepted, but it hasn't got accepted. And to add to your woes is there has been no response or no communication from the editor side as well. What should you do in that case? In that case, you should write it to the reviewer asking for their response or first comments. And in case the first comments are not visible or not available, what you should do is you should ask for withdrawing your paper. Because if the review is taking more than the time which you were initially thinking, it is always good to withdraw your paper and send to some other journal where reviews are faster. So, because once your reviews are faster and have started, it's always good to rewrite that paper in terms of the reviewers' viewpoints and then send it back again to get it published or accepted first. So it's very important to understand as to what exactly has to be done. And author guidelines is another segment which we need to see, because I already mentioned that every journal has their own set patterns for publication. We need to pay due attention to the guidelines. If we fail to follow the guidelines as written on the journal website, it is going to be a difficult task for even getting the first review comments. They might be rejected from the desk as well. Some journals also provide you the publication assistance also. Publication assistance, rather publishing assistance. For those publishing assistants provide you with proofreading services and grammar editing services, so as to ensure that your paper is formatted as per the guidelines mentioned in the journal. But then saying that your paper, even though formatted as per the guidelines, proofread, doesn't guarantee that your paper will be accepted. Right? I repeat, in case they are providing you with services, those services are only secondary to their work. So even if you use their services, it is only a part of their activity which they have actually promoted for. But it doesn't mean that your paper will be submitted just for the fact that you have used their service. No. Then I was talking that there are certain article level, generic level, author level, and journal level metrics. Like the article level I was talking was that we need to see the site score, we need to see for author level how many number of publications he has done, what is the H index, and for journal level I was talking that what is the Simago factor. These are the metrics which will go in a bit detail once we are into research publication mode. Then we'll try to find out as to what are the areas or what are the parameters
for each level, so that we can find out what exactly we should do when we are looking to publish a paper with a particular journal. And what is the H index? I've written a very easy to understand definition. And H index is, suppose an example is mentioned, an H index of 40 means a scientist has published 40 papers and each of them have what? At least 40 citations. So if my citation, or if my H index is only 2, it means I have only 2 papers published which have at least how many citations? 2 citations. Is the concept clear? So if, say, suppose someone of you has an H index of 5, it means that you have published 5 papers and each of them have at least how many citations? 5 citations. Greater the H index, better you can say the quality of a researcher also. However, the citation or the H index which is shown on Google Scholar is different from the H index which is shown on the Scopus. Why? Because Google Scholar will be accepting any paper and Scopus has its own set database, and on the basis of database, their own set databases, they have their own H index. Another thing is impact factor. Impact factor, I had already mentioned that it only talks about the number of citations per article. So we can see how we can actually calculate what is the formula being used. See, the years being considered are 2015, 16, and 17. And what we have done is we have actually calculated how many times the articles were published in 2015, 16, and out of 15 and 16 articles, how many were cited during 2017. So that is the number of citations which actually are represented by impact factor. So 2020 और 2019 के अगर हम डॉक्यूमेंट्स को जोड़ लें, 2019 और 20 के डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने से उनमें से कितना साइटेशन हुआ, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका न्यूमरेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके इंडेक्स हुए थे प्रीवियस 2 साल में. ठीक है, so that is how impact factor is usually calculated. But let's not get into complication. Impact factor सिंपल यही है कि कितना citation आपको हर आर्टिकल पे मिल रहा है. ठीक है, और H इंडेक्स बताता है आपके कितने पेपर्स में से कितने पेपर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स में मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशंस हो चुके हैं. H इंडेक्स एक ऑथर की क्वालिटी बताता है, इम्पैक्ट फैक्टर यूजुअली एक जर्नल की क्वालिटी बताता है. और मैंने एक और से आईडी बता दिया था कि एक ये ओपन रिसर्चर की आईडी होती है. इट इज़ यूजुअली अल्फा न्यूमेरिक एंड इट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद स्कोपस एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिसर्चर. जैसे गूगल स्कॉलर की आईडी होती है वैसे और से आईडी भी होती है. ओके, क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड नाउ. So this and the previous session, with both sessions, I've been able to cover the basics of publication, right? And any questions from your end? Sir, a question from my side. Yes. सर, जब हम किसी पब्लिशर को अपना रिसर्च पेपर भेजते हैं और पब्लिशर जो है रिव्यूअर्स के पास उस रिसर्च पेपर को सेंड करता है, तो क्या रिव्यूअर्स के बारे में वो रिसर्चर को कोई इन्फॉर्मेशन देता है? Reviewer, see, as far as I am the reviewer for currently for 2 journals, what the process is for a reviewer. Okay. If it is possible, could you keep your मेरा क्वेश्चन जो है सर ये है कि रिसर्चर को कैसे पता लगेगा कि जो है कि मेरे ही डोमेन वाले जो पर्सनल है उन्हीं को मेरा रिव्यू करने के लिए पेपर भेजा गया है? I'll tell you वो उसका मेथड होता है. Just a minute. Okay, now let me explain. Currently I am reviewing for 2 international journals. तो प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ. प्रोसेस है कि जर्नल के एडिटर इन चीफ का आपको एक मेल आता है, ठीक है. एंड जब वो मेल आपके पास आ जाता है तो आपको पूछा जाता है whether you are interested or not. अच्छा, पहला सवाल तो ये आता है कि मेल आता ही क्यों है.
तो मेल इसका आता है क्योंकि आपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया होगा, ठीक है। जब आप किसी इंटरनेशनल जर्नल के रिव्यू पैनल में जुड़ते हैं एज अ रिव्यूअर, सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिमार्केट 3 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली 3 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ही बोलते हैं। तो अगर आपने 3 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे डिमार्केट कर दिए, जैसे मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी मार्क कर दिया, कैपिटल मार्केट्स कर दिया और एक और एरिया कर दिया, तो मुझे अब कोई भी पेपर उस पर्टिकुलर जर्नल से मिलेगा तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी या कैपिटल मार्केट्स या और किसी का ही मिलेगा, ना कि किसी कंज्यूमर बिहेवियर का मिल जाएगा या हेल्थ का मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। Because editor-in-chief also has the equal responsibility of sending the papers only on a role and understanding कि जो reviewer है वो उसी में, plus the reviewer also gets 21 days to first give a yes कि okay he is going to review, and then he gets another 15 days to actually review, so almost like 1.5 months का window मिलता है जिसमें सारा review वाला process होता है किसी एक reference के। But the idea is if but the answer to your question is कि अगर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है तो 90% ऑफ द चांसेस इज यू विल नॉट गेट द पेपर टू रिव्यू। इफ योर इंटरेस्ट एरिया इज से मनी मार्केट्स एंड मेरा एरिया वहाँ पे मेंशन नहीं है मनी मार्केट्स, तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि वो सब थीम तक वो जाते हैं आपका स्पेशलाइजेशन लेने तक। तो आज तक की डेट में मैंने जितने भी रिव्यूज़ किए हैं, मैंने सारे रिव्यूज़ कैपिटल मार्केट्स के ही किए हैं, मैंने बियॉन्ड कोई रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने मार्क करके रिव्यूअर को दे दिया है तो ऑटोमेटिकली वो जाएगा। और दूसरी चीज कि आप थोड़ा सा और समझें कि जर्नल्स आर इंटरनेशनल एंड जर्नल्स आर ऑफ हाई पेडिग्री एंड दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट एट स्टेक। They usually are very professional, even desk research से जब वो reject करते हैं, the sentences which they usually write is pretty much very concise and very good. They do not leave it to any assumption whatsoever. काफ़ी अच्छे से वो समझाते हैं आपको, अगर वो रिजेक्ट भी कर रहे होते हैं तो क्लास बहुत अच्छे से मेंशन कर देते हैं क्योंकि सो एंड सो आर द रीजंस एंड यू में एक्चुअली लुक फॉर सम अदर जनरल, तो ये चीज़ भी क्लियरली मेंशन करते हैं। और अगर वो रिव्यूअर को भेज भी रहे होते हैं तो रिव्यूअर को भी बता देते हैं कि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसमें अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, इसका रिव्यू करना चाहते हैं तो ये सर नो में करें। बहुत मुश्किल ही है कि ऐसा चांस हो कि आपको नॉन इंटरेस्ट एरिया का पेपर मिले, ठीक है, देन प्योर बैड लक एंड मे बी नॉन कॉम्पिटेंसी फ्रॉम दी जर्नल्स एंड अदरवाइज जर्नल्स जिन पे अगर आप अच्छे जर्नल से पब्लिश करेंगे तो वो एरर नहीं आता है। मार्केटिंग की रिव्यूअर्स को आप कोर फाइनेंस दे सकते हैं या कोर एचआर का नहीं दे सकते हैं, वो तो क्लियर कट सेगमेंटेशन उनका होता है, तभी रिव्यूअर्स बहुत सारे जुड़ते हैं। एंड दूसरी ओके चीज सर, थैंक यू। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, नो वन गेट्स टू नो कि किसका पेपर है। आई हैव नॉट गॉट टू नो मैं किसका पेपर रिव्यू कर रहा हूँ आज तक की डेट में, and it takes a lot of time and review, in fact even to review one paper it actually milta to dead end 15 days है, it never actually gets completed within 15 days, थोड़ा लंबा ही खींचता है because when you are reviewing you are absolutely starting from scratch and उनके भी points बहुत clearly होते हैं कि आपको इन points पे ही करने होते हैं। फिर उनके जो pointers होते हैं वो pointers for the editor होते हैं and pointers for the author होते हैं, तो there are separate points for the author also, separate points for the editor also, because maybe want to say to editor कि एक रिव्यू में आप इसको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप ऑथर को क्यों बोलेंगे, तो आप ऑथर को शायद वहीं पर ही रोक के बता देते हैं कि these are the changes required. Okay, any other questions? बस एक क्वेश्चन रहा। विभा सोमनाथ चिका। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ पब्लिकेशन राइट नाउ। तुम लोग के एंड से सिर्फ एक काम ये करना है कि ऑल नीड टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ पब्लिकेशन। आई ऑलरेडी शेयर द प्रेजेंटेशन,
तो उस प्रेजेंटेशन के बेसिक्स को एक बार जस्ट गो थ्रू एंड create your IDs on whatever portals I've already mentioned in my last class so that you people can reach to the level and उस level के बाद start reading. As I've already mentioned that the more you will read the better an understanding you will gain and बस वो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मैंने बताया था कि abstract आप लिखते चलें किसी भी पेपर का becomes easy. राइट अप लिखना अगर हम शुरू कर देंगे सिनॉप्सिस लिखना शुरू कर देंगे रिसर्च पेपर का तो काम काफ़ी आसानी से बढ़ता है एंड धीरे धीरे ही सही लेकिन आपका पीएचडी का काफ़ी काम वहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। सर हाँ जी किशन। सर अपना फील्ड हम लोग कैसे नैरो डाउन करें, मतलब लिटरेचर रिव्यू रीड करने के लिए, जैसे अगर लिटरेचर मैं रिव्यू जी व्हाट इज योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन? सर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है ओके तो डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ब्रॉड हो गया किस यस इंडस्ट्री में करने का है? कोई इंडस्ट्री सेलेक्ट की है? सर सर यूजुअली मार्केटिंग में था तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ये सब अब सर थोड़ा सा आउटडेटेड है, और इंडिया के एक्सपेक्ट में जब तक हम्म रिसर्च हम करेंगे भी तो वही है कि मार्केटेबिलिटी नहीं रहेगी। मार्केटेबिलिटी रहेगी और नहीं भी रहेगी तो उसके लिए तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना चाहिए। जी डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं राइट? जी ठीक सर। है क्योंकि हमें नैरो डाउन करना है तो हमें सबसे पहला काम करना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के डायमेंशंस देखने होंगे और यस दूसरा ये है कि हमें उसको कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेट कर लेना चाहिए। उसके लिए पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अभी रिसेंट रिसेंट जो मैंने देखा है जी हालांकि डिजिटल मार्केटिंग है मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। जी इधर काफ़ी मैंने रिसर्च पेपर्स देखे हैं जो कि ट्विटर माइनिंग पे बने हैं। जी ठीक है ट्विटर माइनिंग का मतलब हुआ कि आपने ट्विटर के लास्ट 1 ईयर का डेटा उठाया। ठीक है जी डेटा कैप्चर किया है वन लास्ट ईयर जितने भी पोस्ट आए हैं। ठीक है जी आपने उनके हैंडल्स के पोस्ट को पढ़ा और उन पे आपने एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर ली। तो इधर ये टाइप के पेपर्स भी बहुत आने लगे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज सॉर्ट ऑफ अ डेटा माइनिंग ऑन अ पर्टिकुलर सोशल मीडिया टूल। सो इवन यू कैन थिंक ऑन दोज प्रोस्पेक्ट्स। फिर लोगों ने इधर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना शुरू किया है। तो इन नंबर ऑफ एरियाज हैं जिसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो नहीं हो सकता। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विजिटिंग एलसीवियर एमरल्ड और इवन एब्सको। तो वहाँ पे कुछ अच्छा रिसर्च तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग के एक्सटेंशन एक्टिविटीज में मिलेगा। वंस यू विल हैव सम आइडिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या डोमेन है फिर उसको सोचो कि इंडिया के एस्पेक्ट में क्या लग सकता है जी सर। क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है अभी इट इज़ लाइक है तो जैसे कंज्यूमर बिहेवियर हो गया फाइनेंस हो गया ऑपरेशन हो गया। अभी तुमने सिर्फ फर्स्ट लेवल उसकी स्क्रीनिंग की है तो इसको स्क्रीन करते 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 वो उसी समय आएगा जब हम रिसर्च में बस पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स वाले पेपर मत पढ़ना डिजिटल मार्केटिंग के एडवांस पेपर्स पढ़ना। you'll get a better idea of what can be done. You will instantly click because the better part of digital marketing in India is that we still are a developing economy and जी सर। digital marketing काफी नेशंस में आके स्टेलमेंट में आ गया अपने यहाँ तो अभी भी चल ही रहे हैं। तो मे बी वैसा रिसर्च शायद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। तो दैट विल बिकम वन ओरिजिनलिटी पार्ट ऑफ योर रिसर्च ऑल्सो। यस मार्केटेबिलिटी एस्पेक्ट पे वैसे देखना पड़ेगा कि क्या वो मार्केटेबल है 4 साल के बाद नहीं ये तुम्हें देखना पड़ेगा। यस एंड सर जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे मेरा मेटावर्स और उधर इंटरेस्ट है, तो उसमें हम्म एंटर होने के लिए क्रिप्टो करेंसी को समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो आई वाज हम्म थिंकिंग कि सर जैसे उस पर जीरो नॉलेज है, क्योंकि हम्म अभी इंटरनेट पे मैंने काफ़ी उस पर रिसर्च किया, बट सर वो ऑन हम्म पॉइंट नॉलेज नहीं है। तो जस्ट लाइक दैट अभी हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, वैसे ही इतना वास्ट है। फिर उसमें एक हम लोग ने डोमेन लिया, उसका भी एक सब डोमेन लिया, उसको हम लोग नैरो डाउन तो कर रहे हैं, हर ही कोई कर रहा है, बट सर उस पे जैसे मुझे अगर क्रिप्टो के बारे में जानना है तो मुझे अभी सब्जेक्ट का ही नो हाउ नहीं है। हम्म तो फिर उस पे पेपर रीड करना, वही जो मैंने आपसे कल शेयर किया था प्रॉब्लम। उसके लिए तो हाँ उसके लिए तो तुम्हें पहले सब्जेक्ट नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ये व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट अच्छा एंड अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा जितना समझ में आ जाए उसके बाद ही यू कैन एक्चुअली डिसाइड ओके दिस इज वन रिसर्च बट डूइंग रिसर्च ऑन एनी टॉपिक
if I did my PhD in finance, I needed to have an understanding of finance also. And similar is your area. If you want to do any research on cryptocurrency, you need to have an area of understanding first. Only then you can actually do the mining part on it कि okay मुझे क्रिप्टो करेंसी में इस पार्ट पे पढ़ना है. अभी तो पहले से समझदारी उसमें बढ़ानी है कि उस आइडिया में है क्या. जैसे अभी एनएफटीज बहुत आए हुए थे, तो एनएफटीज इन इटसेल्फ इज अ वेरी नोवेल कंसेप्ट. उस पर रिसर्च लिखने के लिए हमें पहले ही समझना पड़ेगा कि एनएफटीज होते क्या हैं. Yes, sir. तो दैट विल So कम ओनली व्हेन यू हैव दैट सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग. the challenge कि आरएम तो altogether is new, वो साइड में रखें, तो अब सब्जेक्ट नॉलेज में भी पूरा पहले सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के पेपर जानना पड़ेगा. Right. See, publication obviously will come at a later stage. My duty was to just to give you a showcase of what is going to come, and I Yes. always wish that maybe someone would have told me right from my first 6 months so that you are required to publish your papers as soon as possible, because that Yes. gives you one step ahead from everyone else. Better quality of research papers is possible only when you have time up sleeve. Because 1 से 2 years are past, 2 years, 2 साल बहुत जल्दी निकलते हैं. 2 साल के बाद का टाइम चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आप अपनी पीएचडी पे बिल्कुल ही लगे रहते हैं. तो जो Yes. पब्लिकेशन का है वो इनिशियली के पहले 2 साल में ही होता है. फिर अंतिम के तीसरे चौथे साल, बाय द टाइम यू आर राइटिंग योर थीसिस, यू आर डूइंग द डेटा एनालिसिस, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरी अदर टास्क आल्सो. Okay, sir. एंड सर जैसे रिसर्च के लिए कल भी आप बता रहे थे कि कंज्यूमर बिहेवियर में रिसर्च है, तो सर ये इतने ब्रॉड सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया गया कि इसमें मेरी रिसर्च है? जैसे आपका जो टॉपिक है तो इट इज वेरी क्लियर कि हाँ फाइनेंशियल लिटरेसी पे है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है. जैसे कंज्यूमर बिहेवियर इतना बड़ा बुक है, इतना टॉपिक है उसका, तो उसको कैसे नैरो डाउन किया गया कि इसकी ये रिसर्च है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है, मैंने सोशल मीडिया कह दिया तब भी नैरो डाउन हुआ, तो इस तरीके से सर कंज्यूमर बिहेवियर कैसे किया गया उस चीज? सी, अगर आपका एरिया, आपको डोमेन पता है, सिर्फ एक ही वे से क्लियर होता है. ठीक है. जी. जी. और वो होता है व्हेन यू विल बी रीडिंग योर रिसर्च पेपर्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. अब सीबी भी जो है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली स्टार्ट सर्चिंग पेपर्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर से, या स्टार्ट सर्चिंग पेपर्स ऑन से डिजिटल मार्केटिंग. व्हेन यू विल हैव से अराउंड 100 पेपर्स डाउनलोडेड, 100 पेपर अगर आपने डाउनलोड किए तो आपको पता चलेगा कि 100 पेपर के टाइटल्स पता चलेंगे. उन जी. टाइटल्स को जब आप लेफ्ट राइट इन सेंटर एलिमिनेट करना शुरू करोगे, देन यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 10 पेपर्स. बिलीव मी, यू विल नॉट बी लेफ्ट विद मोर देन 10 पेपर्स ऑफ गुड क्वालिटी. शायद वो भी ना मिले. तो जब आपके पास 5 से 10 पेपर मिलेंगे तो आपको शायद टॉपिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ओके डिजिटल मार्केटिंग इस एरिया में भी लग रहा है, इस इंडस्ट्री में भी लग सकता है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में लगा, और ये डायमेंशन से. Then the faster process is कि okay, this is the first level of screening you've done. Second level of screening is to find out what existing PhDs have been done in that area. First start with research papers, then try to find out what PhDs have been done. Then you will try to find out what higher level of advancements are there in the research. Digital marketing में भी कुछ high level advancements तो हो ही रहे होंगे. तो जी. वो आप फिर इंडिया से कनेक्ट करके देखो कि अगले 5 साल में क्या पर्टिकुलर कंसेप्ट कितना कंटेम्प्रेरी उस समय होगा. तो सब कुछ रिलेट करके चलना पड़ता है. कोई भी चीज़ आइसोलेशन या कंपार्टमेंटलाइज नहीं की जा सकती है. यस. एंड सर सिंस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, अगर उसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें, तो द थिंग इज कि उसका कोई मटेरियल तो है नहीं, जस्ट लाइक बुक्स होती हैं तो You वो भी should start, there's a course from Michigan University, online course है Coursera पे. एक वो अच्छा course है. I have done that course from Coursera only. Otherwise what you can do is उस course की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. You can go through maybe स्वयं के chapters पे भी शायद available होंगे courses. थर्ड, आपके पास YouTube है. YouTube पे काफ़ी अच्छे ओरेटर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी पे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. उन पे भी क्रिप्टो करेंसी का कंटेंट मिल जाएगा. एंड ठीक ठाक. एंड देन देयर इज अ चैनल कॉल्ड सीएनबीसी आवाज़. सीएनबीसी आवाज़ पे क्रिप्टो करेंसी का एक शो भी आता है शाम में. तो और वो है बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी करके है कुछ शो. इट कम्स एट 7 or 7:30 in the evening every week. Even that is very good because it actually solves a lot of questions of the
end consumer? सर सिंस ये ब्रांच ऑफ नॉलेज इज स्टिल डेवलपिंग, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे एंड बाय द टाइम हम लोग थीसिस पे काम करेंगे एंड करेंगे, तो हो सकता है क्योंकि सर जो अभी जितनी भी नॉलेज है, खासकर जो इंटरनेट पे है सॉफ्ट कॉपी में, वो तो चेंज होती रहेगी और वो किसी का ओपिनियन है। ऑथेंटिक पेपर्स पे बेस्ड बुक्स तो है नहीं जैसे हम लोग पढ़ते हैं बाकी कोर्सेज की। तो राइट। ये चैलेंज नहीं बनेगा सर मीनवाइल कि हम लोगों ने किसी कॉन्सेप्ट पे किसी मॉडल को एक फाइनेंशियल मॉडल, मेरा तो फाइनेंस की तरफ सर नहीं जाएगा, हाँ, बट अगर मैंने उसको डिजिटल उस पे लिया कि ब्लॉकचेन it पे is बेच it is it is always a challenge. Those who are working on data and existing PhD students, उनके लिए चैलेंज होता है ऐसा टॉपिक, ऐसा डोमेन जो कि कंटिन्यूअसली फ्लक्स में है या कंटिन्यूअसली चेंज मोड पर है, उनके लिए ये डिफिकल्ट होता है। दूसरे कि आपके ओपिनियन में इस तरीके का टॉपिक कुछ पिक करना चाहिए। अगर मैं मेटावर्स पे जाऊं तो इट इज ऑल टुगेदर, सिंस इट इज रिलेटेड टू द मार्केटिंग, इट इज रिलेटेड टू मैनी मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, तो उस पे क्रिप्टो मेटावर्स ये अपने आप में काफी फ्लक्स हो रहा है, तो ऐसा कुछ टॉपिक लेना चाहिए। See, picking up topic is good, but I think in that case, what you should do is you should begin with a topic on research, and later on, once your research is taken to another level, then you can think on your PhD also. That maybe that is one area of proceeding ahead. ओके सर। तो ठीक है। अभी अभी तो मेरे ख्याल से यू शुड जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि कितना किया जा सकता है। अभी ओनली आइडिया शुड बी टू रीड एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल। वंस योर पेपर्स आर डन, यू विल बी इन अ पोजीशन टू एक्चुअली डू बेटर। बट पेपर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से एरिया आपके लिए ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। सी, डेटा अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। कुछ जगह पे आपको डेटा नहीं मिलेगा तो आपके लिए डिफिशियंसी आगे जाके होगी। तो बेहतर है कि हम वो चीज़ भी पिक करें जहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा अवेलेबिलिटी का इशू ना हो आगे। जी। सर जो ये हम लोग पेपर डाउनलोड करते हैं तो कई होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं, जैसे अगर मेटावर्स पे भी पेपर हम सर्च कर रहे हैं तो 2016 का अवेलेबल है, और इतना रैपिडली ग्रो वाला करने वाला नीश होने के कारण सर उस पर इतना रिलायबल भी नहीं है, बहुत बेसिक है। तो ये लेटेस्ट पेपर सर जो नहीं है, संस्थान की तरफ से भी नहीं मिल सकते और इंडिविजुअल परचेज भी नहीं कर सकते, तो वो कैसे अरेंज किए जा सकते हैं, कोई अगर आपको सी, सजेशन। 2021 ऑनवर्ड्स एक बार फिल्टर लगा के गूगल स्कॉलर पे किया जा सकता है। जी रिसर्च गेट पे भी किया जा सकता है। एंड इफ यू फाइंड देयर आर रिसर्चर्स ऑन गूगल स्कॉलर जो कि मेटावर्स पे लिख चुके हैं, यू कैन easily contact them on LinkedIn also, and they would be more than happy to share their papers. Because this is usual practice which I follow. What I usually do is, in case I find a researcher who has written a good quality paper, I can either request him or her on ResearchGate, or I can also request him or her on LinkedIn also. So that are two basic approaches of actually getting a research paper, and they are happy to actually help out. बट ये उसी समय होता है जब हम ट्राई करते हैं, तो आप ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर सही सपोर्ट मिलेगा। जी सर। सर दिस वन मोर क्वेश्चन कि हम्म। से आई वाज रीडिंग वन पेपर, उसमें उन्होंने ऑनलाइन कलेक्ट किए थे रिस्पॉन्सेज, तो अभी गूगल पे ज्यादातर लोगों को अपनी कम्युनिटी में भी आता है कि ये क्वेश्चन आया फिल कर दीजिए। तो सर हम्म। कुछ रिसर्चर्स होती हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलेज रीजन पे लिया है, रैंडम हम्म। सैम्पलिंग उन्होंने पिक किया है, तो ये ऑनलाइन सर जैसे मे बी यू उन्होंने मार्केटिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग करके या अपने सर्किल पे सर्कुलेट करके सैंपल कलेक्ट किए हैं, तो सर उससे उनकी ऑथेंटिसिटी कम नहीं होती? मतलब ऑफ कोर्स हर एक को हम लोग पर्सनली बैठ करके उनसे नहीं फिल करवा सकते, ना ही शेड्यूल फिल कर सकते हैं, बट ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का तो, सी, ऑथेंटिसिटी इज एन ऑफ शूट ऑफ योर सैम्पलिंग। इफ योर सैम्पलिंग इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जो इस केस में यूज हो रही है, तो जी सर। कन्वीनियंट सैम्पलिंग की ऑटोमेटिकली लिमिटेशन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी सब जगह फ्लोट कर दिया है ग्रुप्स में, तो आपको जो डेटा वो मिलेगा वो बहुत ही कन्वीनियंट मोड पे मिल रहा है। जो चीज़ जी कन्वीनियंस से मिलती है वो बहुत आसान अच्छी होती नहीं है। ठीक है, ये मेरा मानना है। एंड सैम्पलिंग में ही लिमिटेशन है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का अपना ही लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन तो रहेगा ही रहेगा।
सर अगर स्टैटिकली इसको हम्म, जब हम लोग पोर्ट्रे करेंगे, पेपर में हम्म, दिखाएंगे, तो इस चीज को वहाँ पे एज एन एरर या इसका कुछ वहाँ पे मार्जिन रखते नहीं, हैं? नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक See, पेपर। that is your research. Your research is limited to your perspective. So if you're using a convenient something, that is fine. एंड जो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, वो रिजल्ट्स की जो जनरलाइजेशन होती है, वो जनरलाइजेशन भी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ की है। तो हर एक चीज़ कुछ एजम्पशन से बनती है। तो आपकी रिसर्च अगर कन्वीनियंट सैम्पलिंग पे है, तो आपकी रिसर्च का जनरलाइजेशन भी उस कन्वीनियंट सैम्पलिंग के ही पर्सपेक्टिव पर है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। सर एक पेपर अगर हमने इसी तरीके की सैम्पलिंग पे लिख के रखा है और एक दूसरे ने काफी प्रॉपर उसको सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किया है, तो दोनों की ऑथेंटिसिटी में अंतर नहीं आएगा? ऑथेंटिसिटी तो दोनों ही रहेंगी, लेकिन रिसर्च रिजल्ट्स वेरी करेंगे। और और अग, दोनों के ही रिसर्च रिजल्ट्स अपने लेवल पे ओरिजिनल हैं, क्योंकि दोनों ने ही अलग अलग टाइप की सैम्पलिंग यूज़ किया है। लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली सैम्पलिंग डिफरेंसेस हैं। तो सर इंडस्ट्री में फिर किस पेपर को फॉलो किया जाएगा, किस रिसर्च को किया जाएगा? इंडस्ट्री में तो उस समय डिपेंड करेगा कि वो जनरलाइजेशन किस लेवल पर है। हो सकता है वो दोनों ही ना एक्सेप्ट करें। ठीक है। सपोज सर एक अच्छे जर्नल ने एक पेपर को पब्लिश किया है, एक अच्छे जर्नल ने एक पेपर को पब्लिश किया है सेम यूजुअली टाइम पर। गुड जर्नल्स, जब जर्नल अच्छे होते हैं तो वो सैम्पलिंग पे काफ़ी सवाल पूछ लेते हैं। तो अगर अच्छा जर्नल होगा तो वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग को पहले ही थोड़ा सा दरकिनार करेगा, तो आपकी सैम्पलिंग बहुत जस्टिफाई होगी तभी। पीएचडी थीसिस में भी व्हेन यू आर देयर टू डिफेंड अ थीसिस, यू आर आस्क्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्यों सैंपल इतना लिया, क्या मेथड सैम्पलिंग का यूज़ किया, क्यों ये मेथड यूज़ किया। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन जस्ट योर सैम्पलिंग ओनली। तो सैम्पलिंग जितनी अच्छी आती है उतनी ही अच्छी जस्टिफिकेशन भी आनी चाहिए। तो सर जो ये जब कोई एक नया टॉपिक आता है हाँ, मार्केट में, क्या मतलब नॉलेज के इसमें पूरे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है, जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी या कोविड-19 का हो गया था, अब तो बहुत पेपर्स हैं, बट एकदम कुछ रिसेंट चीज आती है तो उसके पेपर्स क्या अच्छे जर्नल्स में वो लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उस चीज को प्रेफरेंस देते हैं? नहीं, see, nothing is accepted easily. Everything is very scientific right now. Paper acceptances are difficult, and when they're difficult for a reason that they're set up very high standards, and those standards have to be met in terms of data collection, sampling, and everything. तो ये चीज़ तो है ही है। एंड सर अगर जैसे ऑनलाइन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस, तो ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं और सिर्फ कानपुर को ही जगह कंसिडर की है, मेरा सैंपल यहीं से पिक हाँ, किया है, या फिर इंडिया के ही पर्सपेक्टिव पे हमने पूरे लोगों को कलेक्ट किया उनसे डाटाबेस, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से फिर पोर्ट्रे की जा सकती है? तो वो मेरे रिसर्च की एक लिमिटेशन हुई, तो इंटरनेशनली हाँ, नॉर्म्स में यूज की वो जाएगी? रिसर्च लिमिटेशन है, बट इट डजंट डिस्काउंट योर research also. Any research which is done locally is good enough research. तो वो इशू नहीं है। I'll take up Jigeshwa, what I'll do is I'll take your questions individually किसी दिन वन ऑन वन जब करूँगा तो हो जाएगा। Any other question, अगर और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो। आई थिंक जिगेशा के काफ़ी क्वेश्चन से मेरे से काफ़ी और लोगों की क्वेरीज भी सॉर्ट आउट हो गई होगी। यस सर, मेरे दो और बड़े बड़े क्वेश्चन है। Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट विल डू इज विल टेक अप ऑन द नेक्स्ट सेशन एंड सी, जितने भी क्वेश्चंस इस समय हैं आप लोग जॉट डाउन कर लिया करो। व्हाट हैपेंस इज वी कैन इजीली हैव अ क्यू एंड ए सेशन वन डे, ताकि हम लोग सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएँ। जितने सवाल इनिशियल लेवल्स पे होते हैं लास्ट 6 महीने के बाद, उसके आगे फिर होते नहीं हैं। इनिशियल लेवल पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं रिसर्चर के दिमाग में, तो जितना पूछोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। And I'm glad that someone is asking for a reason that it only sets up the path across for every other person. सर हाँ, बात नहीं। अरे सर वो बाय मिस्टेकन हो गया सर। ओके, कोई इशू नहीं। ओके, सर व्हाट आई विल डू इज सर अगर बुक्स एक बार, आई डोंट नो, आपने शायद कल कहे हैं, बुक्स बता सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड जो टेस्ट होते हैं वेरियस, उसके लिए कौन बुक्स सी के बुक? लिए आई गेस मेरे ख्याल से फैकल्टीज ने कोई सजेस्ट कर दी होगी।
अदरवाइज एक बार मुझे देख लेने दो कि कोर्स क्या है यहाँ पे रिसर्च का, अदरवाइज आई विल आल्सो सजेस्ट अ फ्यू बुक्स। रिसर्च और स्टैट्स पे मैं दोनों पर ही शेयर कर दूंगा। सर जो आप रेफर करते हो सब प्लीज वही बताइएगा, क्योंकि कोर्स ठीक है, इतना अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर है। आई शेयर यूट्यूब लिंक एज वेल, उसमें भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे प्रॉपर। एंड यस अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू गुड बुक्स जो कि SPSS के साथ ही यूज होते हैं, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर, ओके, ओके, इट वाज ग्रेट थैंक टॉकिंग यू टू यू सर, ऑल पीपल। ओके, थैंक यू बाय सो बाय मच। एवरीवन, बाय बाय।